Okay, good morning, friends. So we'll be starting with the optional class, and as we know that we are going to start with physical geography. So before starting with the actual topics, what we have to do is we have to little bit understand what is essentially physical geography, and for that, just a little bit we'll also dwell into the nature of geography, and then we'll move on to understand what is physical geography. But just before that, I'll start with something which is more basic than what geography is, and then we'll be better able to understand. So we'll have to go into little bit of philosophy, and philosophy talks about theory of knowledge. So theory of knowledge or epistemology, if you talk about, it says that there are two ways of looking at the world. Okay, so whatever phenomena we are talking about or we are trying to study, there will always be two ways of looking at this world. So one way we call it as the realist perspective, and the second, if you talk about, is anti-realist perspective. So there are always two ways of looking at any phenomenon. So if I just talk about realism or realist perspective, what is essentially a realist perspective? Suppose there is an object and there is this human being. So in realist perspective, essentially this object is believed to be, this physical world is essentially believed to be real. It is a real entity. Okay, so that means whatever we are seeing, that is all reality around. In realist perspective basically says that knowledge should essentially focus upon things which are visible, which can be objectively measured. So what is the basic idea of realist perspective? It simply says that all knowledge should be objective. Okay, so that is something which is, can we say, it is the base of the modern science? Yes or no? All sciences are based upon this. So this is realist perspective. However, as you can understand, if I take this glass and have some water, so tell me, describe this glass for me. Can we say, some people will say that the glass is half full, while some will say that it is half empty? Yes or no? So can we say that the phenomena is same, however, the way, the perspective with which we are seeing this phenomena may differ from person to person? Yes or no? Okay. Some more things, like for example, when we are sleeping, all of us would have experienced this. You must have experienced dreams. ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं. यूपीएससी के स्टूडेंट तो ज्यादा देखते हैं. So if you talk about dreams, when we are dreaming in the sleep, can we say कि everything looks like real?
Yes or no? But the question mark is, does that really exist? Or is it existing in our mind? Can we say it is existing in our mind? Okay. So, what is essentially the anti-realist perspective? Anti-realist perspective simply is something like this. Suppose this was our object. So, here it is the mind which is showing what we are seeing. Okay. Whatever we are observing, it is essentially our mind which is showing this phenomena. That means, can we say different people can have different perspective about the same phenomena? If you actually take this example of dreams, or you might have seen, in fact, बहुत hit movies होती हैं, favorite of some people, horror movies देखा है, और बहुत कोर थीम इज द घोस्ट. गाँव में जाओ तो लगभग जितने बूढ़े होते हैं सबके पास एक घोस्ट वाली स्टोरी होती है, उन्होंने देखा होता है. ठीक है. सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, they will tell you something which actually does not exist, but many people will claim that they have seen it and it exists. So even this we can take little bit further, and it can also be seen as probably reality is, we do not know it actually exists or not. Maybe it is just a projection of our mind. Mind is showing many things to us. So this perspective is referred to as the anti-realist perspective. Okay. So what anti-realist perspective says, that the anti-realist perspective is simply saying that the objective sciences, or the realist perspective, what it is doing, it is reducing knowledge. Knowledge is not just cause and effect phenomenon. It is not just the physical world. Even the emotions that we feel, the subjectivity that we have, it affects us. So although we cannot directly see it, we cannot perceive it, it cannot be measured objectively, but still it does exist. So it calls the realist perspective as a reductionist perspective. Why? Because it reduces knowledge. Okay. So what is anti-realist view? That subjectivity is the domain of human beings. And if you talk about humanness, is essentially equal to the variety and uniqueness. So any knowledge cannot be complete till it takes into account all the perspectives about a given phenomenon. About a given phenomenon. Okay. So if we talk about the realist perspective बहुत simple है. वो कहता है कि if there is any phenomena taking place, we can call it as essentially an effect. So if there is an effect, there will always be what?
cause for it. ठीक है, and this cause can be known. It lies where? This cause lies in the objective world. ठीक है, you can very clearly understand, as we said, this is the perspective of sciences, the natural sciences. While if you talk about this perspective, the second perspective that we are talking about, can we say it is the perspective of philosophy? It is the perspective of humanities, as we call them. ठीक है, so there are two ways of looking at the phenomena. Even in geography, if you talk about, we will find that there are both these ways of looking at the phenomena. ठीक है, so in geography syllabus में देखेंगे हम, एक टॉपिक है, बाद में आएगा वो, and there is this topic of perspectives in human geography, where we'll be talking about lots of philosophies. And in this, there is one topic, can you see this? Dichotomy and dualism. Okay, so dichotomy and dualism are essentially what? They are, it simply refers to divergence of views on the same phenomena. So we will see that history of geography essentially has been filled with dichotomy and dualism. So we will find in the ancient times there were geographers, like for example we'll talk about the Greco-Roman geographers. In Greco-Roman geographers we will be finding majority of geographers focused on study of physical world, that is physical geography. But still there were others whose focus more was on study of human geography, like for example the culture of the world, like we'll talk about later Strabo, one of the geographers who focused upon the study of cultures. Okay, so we find that since the ancient times there has been two type of views within geography, whether geography is study of physical geography or whether geography is study of essentially the human geography. Okay, so similarly here also in geography there are two views of looking at the phenomena. There is also dichotomy, how geography should be studied. Subjective, it is subjective, definitely we can say that. So that is basically just, that is basically the nature of geography as a discipline. अब ये जो duality है, जो dichotomy है, ठीक है, geography में हमें कई जगह पर दिखाई पड़ती है. ठीक है, everywhere we will be finding in geography it is. So we will be finding, for example, this dichotomy and dualism in geography is found in the subject matter of geography में भी मिलता है हमें. So subject matter, you know, some would say that geography should more focus upon study of physical geography, and some would say that it should more focus upon the study of human geography. ठीक है, similarly it is also there in the approach of geography. Some would say that geography should adopt a systematic approach to study of phenomena, while others would say that geography should adopt a more regional approach to the
study of phenomena. ठीक है. Similarly, when it comes to the study of human geography, some would say that geography should adopt a more determinist approach, while others, if you talk about, would say that it should adopt a more possibilist approach. I'll explain all these terms, Avi, just I am writing them down. Similarly, the framework of study, what should be the framework in which geographical phenomena should be studied? So, some would say that geography should focus only on study of phenomena in space, while others would say that it should also include the study of phenomena in time. You cannot separate space and time. ठीक है. So what I'm just trying to say कि ये जो मैंने philosophy की बात की, ये philosophy reflect होती है पूरे geography में, जहां पर we find that on everything there is at least two different views how to study the phenomena or the geographical phenomena. So here first we are going to talk about mostly the physical and human geography. Just मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ. I'll come back to this point later on. I hope you understand what is systematic approach. मैंने preparatory classes में भी किया था, but just for the people who are new. So you know that geography has number of branches, and there are two major branches of geography. So here we are talking about the branches of geography. So there is one branch which is physical geography, and then there is another branch which is human geography. And physical geography can be divided into sub branches. जैसे हमने देखा है that there is study of landforms which is referred to as geomorphology, study of the atmosphere which is referred to as climatology, study of the oceans which is referred to as the oceanography, study of the biosphere which is referred to as the biogeography. Similarly, in human geography, we can talk about, like, there is economic geography, there is study of the demography, it is referred to as population geography, settlement geography, cultural geography. So these are some of the branches of sub branches of physical and human geography. Now we know very well that geography is essentially what? Can we say it is a spatial science? It is study of phenomena in space. Okay, how things, major focus of geography is how phenomena are distributed over space. That is what geographers want to essentially understand. So here the columns essentially are what? These are various spaces which are found on the earth's surface. So for example, can we say, for our understanding, can we say like continent of Africa, is it a space? Obviously yes. Similarly, we can talk about Asia, we can talk about Europe and so on. So these basically represent what? These represent area, or in geography we call these areas as regions. Okay, so these are essentially regions. We can further divide Africa into number of areas, like for example, can we talk about Northern Africa? We can talk about the Guinea coast of Africa or Western Africa, Central Africa, Southern Africa, Eastern Africa. So again, I can divide the main region or big region into sub-regions. Okay. What is essentially systematic approach? Systematic approach is like science. Science क्या करता है? Can we say कि science
फिजिकल वर्ल्ड के एक फिनोमेना को पकड़ता है और उसको एंटायरिटी में पढ़ता है. लाइक if we take the case of physics, can we say physics is studying the non-living things and the physical laws which govern the non-living things? That is the domain of study of physics. What is the study of chemistry? Can we say it is more concerned with the internal organization of these non-living beings? That is chemistry. Biology focuses upon the study of living world. ठीक है. So what sciences do, they take one phenomena and they study it in entirety. So same is the case of systematic geography. Systematic geography क्या करता है? Systematic geography एक phenomena को पकड़ेगा, जैसे कि हमने देखा landform, और we are studying it under geomorphology. So it will take that landform and study it in the entire world. How these landforms are found in the entire world. ठीक है. Similarly, if I am talking about the economic characteristics, then economic geography क्या करेगा? It will take a phenomena. Like for example, एक phenomena हम ले लेते हैं agriculture. ठीक है. So how agriculture is found in different parts of the world? What is its characteristics? ठीक है. So this type of study, जब हम ये इस तरह की स्टडी कर रहे हैं, तो it is what? It is systematic approach. I hope it is clear. ठीक है. So systematic approach क्या है? साइंस की तरह होता है. साइंस क्या करता है? साइंस हमेशा जनरलाइजेशन करने में बिलीव करता है. So it will study varied phenomena and out of that it will find common things. और उन कॉमन थिंग्स के ऊपर it would make some theories and laws. ठीक है. So systematic approach is essentially what? It is the scientific approach. तो ये भी यहां पर क्या कर रहा है? जियोमॉर्फोलॉजी में या क्लाइमेटोलॉजी में या ओशनोग्राफी में, इट इज स्टडिंग ऑल दीज फिनोमेना, बट उसका फोकस डाइवर्सिटी पढ़ने में नहीं है. उसका फोकस कहां पर है? इन सभी से कॉमन पैटर्न्स जो निकलते हैं, उन कॉमन पैटर्न्स को सर्च करो एंड उसके बेसिस पर व्हाट यू डू, यू मेक थ्योरीज लॉज, थ्योरीज एंड लॉज. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन वी से हमें अमेजन में मिलते हैं, दैट इज साउथ अमेरिका. डू वी फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो इन अफ्रीका? वी फाइंड इन द कॉन्गो बेसिन, वी फाइंड ऑन द गिनी कोस्ट, वी ऑल्सो फाइंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया, एंड देयर आर सम स्कैटर्ड प्लेसेस विद इन द ट्रॉपिक्स वेयर the Amazon or where the tropical rainforests are found. अब ये सारे फॉरेस्ट को अगर हम स्टडी करें तो उसमें हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए. लाइक फॉर एग्जांपल, कैन वी से कि इन सभी जगहों पर देयर इज हैवी प्रेसिपिटेशन टेकिंग प्लेस. प्रेसिपिटेशन इज ओवर 250 सेंटीमीटर. ठीक है. इन ऑल दीज प्लेसेस वी विल बी फाइंडिंग दैट देयर द टेम्परेचर, इफ यू टॉक अबाउट एवरेज टेम्परेचर, इज 27 degrees Celsius. We will be finding that there are no winters in such type of climate. ठीक है. So the annual range of temperature is very low, 2 to 5 degrees Celsius. ठीक है. विंटर से समर में जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 2 to 5 डिग्री सेल्सियस ही है. We will be finding कि ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उसमें कम से कम 3 लेयर ऑफ ट्रीज मिलते हैं, एटलीस्ट 3 लेयर ऑफ ट्रीज you will be finding in all these forests. That means these are very, very dense forests. And because these are very dense forests, can we say कि sunlight won't be able to reach to the ground? So we will be finding in all of them less than 1% of the sunlight is reaching to the ground. And if less than 1% of the sunlight is reaching to the ground, can I say कि जो छोटे plants होंगे, those plants, will they also require sunlight for survival? Obviously, yes. So can we say one way is they can get some sunlight if they become climbers? Yes or no? So we'll be finding in across all these rainforests, there would be presence of epiphytes and climbers. Similarly, we will be finding that in all these rainforests, there will be hardly presence of grasses.
grasses would be almost nearly absent. Okay, so when I'm doing this and type of analysis, when I'm finding the common patterns, when I'm making natural laws, this type of study is basically what? It is systematic job. ठीक है? I hope it is clear. वो बात में बात करेंगे. इट इज यू आर टॉकिंग अबाउट डिडक्टिव इंडक्टिव, मैंने यहां पर वो बात ही नहीं की. ठीक है, सो दैट इज द केस. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का. ह्यूमन ज्योग्राफी में वन ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी विल बी द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल लोकेशन में हमें एक चीज पता लगती है कि एक फैक्टर जो डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री के लोकेशन को वो होता है रॉ मटेरियल, और जो दूसरा फैक्टर होता है इट इज मार्केट. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स बट अभी सिंपल रखते हैं इसको. तो टू मेन फैक्टर्स आर रॉ मटेरियल एंड द मार्केट. रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इफ वी आर यूजिंग अ रॉ मटेरियल जो कि वेट लूजिंग है, वेट लूजिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें उस रॉ मटेरियल का थोड़ा सा ही पार्ट फिनिश्ड गुड में एक्चुअली एंटर कर रहा है, और मे बी इट इज नॉट एंटरिंग एट ऑल. ठीक है, सो इन दैट केस अगर मैं इंडस्ट्री को इधर लेके जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे वेस्ट को भी कैरी करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो दिस इज नॉट द आइडियल लोकेशन इन वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज. कैन वी से rather than this, industry should be located near the source of raw material, because then in that case we will be able to reduce the transportation cost. ठीक है, do we find कि major iron and steel industries जो world में होती हैं, do we find that either they are located near the source of iron ore or they are located near the source of coal? ठीक है, take the example of Jamshedpur, Tata Iron and Steel. So where it is located? It is located in Jamshedpur. Nearby we will be finding that Singhbhum iron ore region is found. ठीक है, so the industry is located there. Similarly, if you talk about Bokaro is another area where we will be finding Jharia coal mines. ठीक है, very large coal fields of India are found. So again what we will be finding in Bokaro, there is again iron and steel plant is located, a major iron and steel plant is located. ठीक है, so again what we are finding, there is a natural law or a common law which we are finding, and on the basis of that I can explain the pattern. This same rule will apply even in other parts. Like for example, if I talk about the case of रशिया. ठीक है, तो रशिया में यहां पर कौन से माउंटेन्स हैं? यूराल माउंटेन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सो we later see this Ural Mountains, particularly southern Ural Mountains, are the place where you will find presence of iron ore. ठीक है, here there is a place referred to as Tula. ठीक है, जहां पर हमें क्या मिलता है? We find coal. और इसलिए तुला के पास यहां पर देयर इज मॉस्को. ठीक है, सो कैन आई से मॉस्को, विल इट बी एन आइडियल प्लेस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? डेफिनेटली इट विल बी. ठीक है, सिमिलरली हियर देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस. वन इंपॉर्टेंट इज Magneto, Gosk. So again here what we are finding? We are finding that there is location of iron and steel industry here. ठीक है, तो देखो हम डिफरेंट वर्ल्ड में सेम कॉमन पैटर्न मिल रहा है और उस सेम कॉमन पैटर्न के बेसिस पर हमने क्या किया? एक लॉ बना दिया. ठीक है, so when I am doing this type of study, it is essentially which type of study? It is systematic study.
a more scientific study, systematic approach. ठीक है? So geography has this kind of systematic approach where it tries to do what? It tries to find out general principles. ठीक है? I hope it is clear. तो अगर मैं सिलेबस को देखूं तो सिलेबस में ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है. पेपर 1 इज एसेंशियली व्हाट? इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है? तो पेपर 1 इज एसेंशियली, कैन वी से, it is designed on the lines of systematic approach. ठीक है? So that is the case of systematic approach. However, अगर मैं एक और तरीका है फिनोमेना को पढ़ने का. ठीक है? हम हर जगह पर देखेंगे कि despite several similarities, there can be cases of differences, uniqueness. ठीक है? तो अभी हमने रेन फॉरेस्ट की बात की. When the rain forest after the period of Renaissance came and there was lots of discovery, age of discovery came. So several scientists studied these rain forests in detail and they found many things, as was expected, was common because the environmental characteristics were common. But can you imagine, they were surprised to find out that when they studied Amazon and Congo basin, they found out that not a single mammal species was found to be common among them. Not a single mammal species. ठीक है? So can we say, does it means that the space in itself, what it does, it behaves as a mediator. ठीक है? So suppose what I am just trying to say कि there is two things, human और environment. इस human को मैं living thing भी लिख सकता हूँ, living means. तो एक relationship exist कर रहा है. ठीक है? But ये same relationship अगर स्पेस ए में जाता है, स्पेस बी में जाता है, it goes in space C and so on, what will happen? It will become more unique. It will be different. ठीक है? So here it will be different, here it will be different, here it will become different. ठीक है? So despite similarities, there are also what? Can we say there are also unique features? ठीक है? Knowledge क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं केवल सिमिलैरिटीज को ही पढ़ूं और यूनिकनेस को छोड़ दूं, will knowledge be ever complete? Knowledge will never be complete. ठीक है? So there is another approach in geography which not only tries to understand the similarities, but its major focus is on the study of these unique patterns which are found in different spaces. ठीक है? और ये यूनिकनेस कैसे बनता? ये जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, these elements together combine to create unique things. ठीक है? in different areas. तो अगर मैं अफ्रीका को का ही एग्जाम्पल लूं तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. इफ वी टेक द केस ऑफ अफ्रीका, you know, this is which desert? This is Sahara desert and this is the Congo basin and all. So here is the savanna and if you talk about essentially the tropical rainforest region. ठीक है? तो अगर मैं tropical rainforest region को लेता हूं, we will be finding कि यहां पर हमें मिलता है red soil और यहां पर हमें क्या मिलता है? Here we find that there is presence of desert soil. ठीक है? अब ऐसा क्यों होगा? यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से कंबाइन हुई कि वहां पर क्या प्रोडक्शन हुआ?
रेड सॉइल का। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से कंबाइन हुई कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ डेजर्ट सॉइल। तो लेट अस सी, नॉर्मली हम देखेंगे कि जो क्रस्ट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ number of things, there can be presence of number of things, like for example there can be presence of organic matter, there is presence of silica, there is presence of bases, and there is presence of iron and aluminum। ठीक है, यहां पर भी प्रेजेंट होगा, ऐसा हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, सिलिका कैन बी देयर, बेसिस कैन बी देयर, एंड आयरन एंड एल्यूमिनियम कैन बी देयर। तो जब हम रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, टेल मी, इन केस ऑफ रेन फॉरेस्ट अभी हमने बात किया, इज देयर हैवी प्रेसिपिटेशन टेकिंग प्लेस? तो इफ हैवी प्रेसिपिटेशन इज टेकिंग प्लेस, देयर विल बी इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, और ये वाटर क्या करेगा, इसको डिसॉल्व कर लेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर लेगा, एंड इट विल बी लीच्ड आउट ऑफ द सॉइल। सिमिलरली सिलिका की कैरेक्टरिस्टिक बाद में देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सिलिका बिकम्स मोर सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगेन व्हाट विल हैपन, सिलिका विल आल्सो बी लीच्ड आउट। बेसिस, कैन वी से दे आर सॉल्युबल इन वाटर? दे आर सॉल्युबल इन वाटर, so again they will be leached out. So what will be left in the soil? Iron and aluminum. So if this iron combines with oxygen, it will get oxidized, there will be formation of ferric oxide. What is the color of ferric oxide? It is red. ठीक है, so what it becomes, it becomes रेड सॉइल। ठीक है, इसलिए हमें यहां पर क्या मिल रहा है, वी आर फाइंडिंग रेड सॉइल। यहां की कैरेक्टरिस्टिक देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट सहारा डेजर्ट रीजन। यहां पर प्रेसिपिटेशन इज हाउ मच, इट इज अ डेजर्ट, वेरी लेस प्रेसिपिटेशन। तो इफ इट हैज वेरी लेस प्रेसिपिटेशन, कैन वी से कि ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, एंड इफ इट हैज वेरी लेस, इनफैक्ट लेस जब मैं बोल रहा हूं, प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो भी जो 16 सेंटीमीटर बाद में देखेंगे डेजर्ट में जो प्रेसिपिटेशन होता है, इट देयर कैन बी ओकेजन्स कि साल में एक ही दिन में 16 सेंटीमीटर हो गया और पता लगा पूरे साल बारिश नहीं हुई। ठीक है, सो इट इज वेरी स्पोरेडिक रेनफॉल। तो if you talk about this, again we'll be finding precipitation तो हो ही नहीं रहा। So can we say there will be hardly leaching taking place? Hardly there will be leaching. In fact, this area, ये जो spaces हैं soil के अंदर, जो empty spaces हैं, they are most of the time empty. And can we say कि यहाँ पर जो ground water होगा, this ground water will rise through capillary action. Have you heard about capillary action? So it will rise upwards through capillary action. By the time it is reaching in this soil, what will happen to this groundwater? It will begin to get evaporated. And when this groundwater was coming above, what it was doing? It was dissolving several salts or the bases that we talked about. So when it evaporates, what will happen with the bases? They will precipitate out. They will be left here. So this soil, can we say it would become highly alkaline soil because there will be lots of bases. Here there was leaching of the bases had taken place. That means it will become more acidic soil. ठीक है, so can you see what is happening? What is happening here is that same elements like we talked about land, climate, vegetation, all of these combine to produce two different results in two different areas.
And can we say, because of that, did they become unique? Obviously, they became unique. Okay. So, this type of study, when we are doing from the perspective of regions, when we are combining them to understand why they are unique in themselves, such type of study is referred to as regional study. ठीक है. सो मैं एक रीजन को उठाऊं और उसके सारे एलिमेंट्स को पढ़ूं और देखूं कि कैसे दे आर ऑल इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. सच टाइप ऑफ स्टडी इज रेफर टू एज रीजनल स्टडी. तो इसी को ज्योग्राफी में हम क्या बोलते हैं? रीजनल अप्रोच. ठीक है. इफ आई लुक इनटू माय सिलेबस, पेपर 2 क्या कहता है? It is geography of India. Can we say India is essentially a region? It is a geographical space. So, this is basically what it is, more based upon the regional approach. ठीक है. So, I hope it is clear what is systematic and what is regional. So, we have talked about the approach. Then if you talk about determinist possibilist, ये दो perspectives होते हैं. Determinist perspective क्या होता है? It simply says that there is absence of free will. In simple terms, what is determinism? It simply means there is absence of free will. That means, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इफ देयर इज एन इफेक्ट, देयर विल ऑलवेज बी अ कॉज ऑफ इट. एंड कॉज कहां पर है? इट इज नॉट इनसाइड अस, इट इज आउटसाइड अस, इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. सो समथिंग आउटसाइड एजेंसी इज कंट्रोलिंग माई एक्शंस. ठीक है. So this philosophy is referred to as determinism. I hope you get my point. So this is essentially determinism. On the other hand, possibilist approach is a more humanistic approach, and it believes that nature क्या करता है? It just offers us possibilities. Depending upon our own mindset, our own cultural development, our own technological development, we will choose among these possibilities. ठीक है. So for example, can we say, आज की डेट में एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, and this problem is that of Naxalism. You must have heard about the Red Corridor. This area, if you talk about, is also a area which is forested. Can we say this is also the area which is having lots of mineral resources? ठीक है. तो वो वहां पर सपोज करो कोयला मिल रहा है, वी आर फाइंडिंग कोल देयर. कैन आई से दैट सेम कोल फॉर अ ट्राइब or for a primitive tribe which is living there, that same coal is basically what for them? It is a rock. It is simply a rock for them. But for us, it essentially becomes what? It becomes a very important energy resource. Almost 60% of the electricity generation is in India dependent upon coal. ठीक है. So can you understand? Phenomena same है. नेचर पॉसिबिलिटीज ऑफर कर रहा है, लेकिन दो डिफरेंट कल्चर्स, डिपेंडिंग अपॉन उनका कल्चरल डेवलपमेंट कितना है, दे आर सीइंग द सेम फिनोमेना इन डिफरेंट वे. सो दिस आइडिया इज एसेंशियली व्हाट इट इज रेफर टू एज पॉसिबिलिज्म. ठीक है. सो ये हो गया. फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी की अगर मैं बात करूं, स्पेस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी के. तो स्पेस क्या है? व्हाट इज स्पेस? स्पेस इज द फ्रेमवर्क इन विच द फिनोमिनास और द ज्योग्राफिकल फिनोमिनास आर टेकिंग प्लेस. ठीक है.
तो जब हम ज्योग्राफी में स्पेस की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट दैट आउटर स्पेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली इन अ वे जो लैंड या फिर नॉट इवन लैंड, it is the framework in which the phenomena is taking place. So that is space. In fact, time भी same है, framework in which phenomena are taking place. ठीक है, अगर मैं स्पेस टाइम को बोलूं तो देयर इज स्पेस, कैन वी से कि आवर लाइफ्स आर कंस्ट्रेन्ड विद इन दिस स्पेस एंड टाइम. ठीक है, अगर मैं सपोज करो स्पेस में कहीं एग्जिस्ट कर रहा, कैन आई से कि वो टाइम में भी कहीं पर एग्जिस्ट हो रहा होगा. ठीक है, तो स्पेस और टाइम का जो कंसेप्ट है ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने बात किया, बट ज्योग्राफी और हिस्ट्री के टर्म्स में इट वाज कांत. तो इमानुएल कांत सेड दैट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर यूनिक सब्जेक्ट. Why they are unique subjects? Because geography is something which studies phenomena in space and history is something which studies phenomena in time. ठीक है, so geography क्या है? It is description of phenomena, how it is distributed in space, while history is a report of a phenomena of how the chronology of events are taking place in time. So this is difference between history and geography, but compared to others they are different because they don't have their own subject matter. They are studying all the phenomena. Their subject matter, उनका जो मेन यूनिकनेस क्या है कि एक स्पेस में पढ़ रहा है फिनोमेना को, एक टाइम में फिनोमेना को पढ़ रहा है. ठीक है, तो ये कांत का पर्सपेक्टिव था. बाद में ये पर्सपेक्टिव्स और इवॉल्व हुए, और भी लोग आए. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम वाज हेटनर एंड ही सेड यू कैनॉट सेपरेट स्पेस एंड टाइम. ठीक है, व्हाट इज टुडे, सपोज आज जो मैं हूं, कैन आई से मैं ऐसा इसलिए हूं कि मेरी लाइफ में कुछ एग्जिस्टेंशियल मेरी हिस्ट्री रही होगी, एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस आई हैव बिकम टुडे व्हाट आई एम. यस और नो? ठीक है, मेनी टाइम्स यू माइट हैव हर्ड पीपल, एक्टिविस्ट आर्ग्यूइंग दैट यू शुड नॉट बी गिविंग कैपिटल पनिशमेंट. ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट, and what is their argument of capital punishment? That people are not evil, they have become like that because they have experienced in their history several type of traumatic events. So the question must be asked that when those traumatic events were taking place in their life, where was society at that time? Why the society was not saving them? ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अभी हमने नक्सलिज्म की बात की, तो हम देखेंगे नक्सलिज्म इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द ट्राइब्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज मोस्टली इन द ट्राइबल रीजन. और बाद में देखेंगे कि जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैं एक्चुअली दे कैन बी कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, दे आर द मोस्ट एंशिएंट रेस विच अराइव्ड इन इंडिया. दे आर मेनली प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स. ठीक है, वो सबसे पहले इंडिया में आए. उसके बाद और स्ट्रीम्स आई, उसके बाद आए मेडिटेरेनियंस. ठीक है, फेमसली यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मेडिटेरेनियंस. सो देन केम द मेडिटेरेनियंस. मेडिटेरेनियंस केम विद सुपीरियर टेक्नोलॉजी to these proto-asteroids. What they would have done with the proto-asteroids? Can I say they would have pushed them, they would have done atrocities over them? ठीक है, ultimately what happened? These tribes had no other choice but to go and hide in the forests of India. ठीक है, so they hid themselves in the forests of India. Later, other races also came. So there was, like for example, the major last race to come was
the Caucasoids, the Aryans, what we call them as, they had even superior technology. ठीक है, they had iron tools, so they were able to further conquer this area, and the atrocities over the tribes never stopped. As the new generations came or the new races came, they kept on doing. New civilizations rose, they kept on doing the same thing. You must have heard about the Kalinga War. हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है? तो कलिंग बेसिकली था क्या? कलिंग वॉज अ ट्राइबल रीजन इन उड़ीसा, ठीक है? एंड जो सबसे इजी रूट होता है वो होता है प्लेन का रूट. तो कोस्टल रूट इज वन ऑफ द रूट्स बेसिकली विच इज अ काइंड ऑफ इजियर रूट. तो जब अशोक की आर्मी उधर से जब भी जाती थी या किसी भी राजा की जो आर्मी जाती थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू एसेंशियली वाज दे यूज्ड टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑन दीज ट्राइब्स. ठीक है, तो ये एक जनरेशन निकला. सिमिलर थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड व्हेन द ब्रिटिशर्स केम. व्हाट दे डिड, दे टुक द राइट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम देम. ठीक है, एंड एसेंशियली वी नो देयर वर सेवरल इफ यू टॉक अबाउट ट्राइबल रिवोल्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, पढ़ा होगा. ठीक है, सो ये हिस्ट्री रही है. अब आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, तुम्हारे पेड़ वेड़ काट के करके इधर से मिनरल्स निकाल लेना. ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू इमेजिन, विल दे एवर बिलीव? देयर एक्सपीरियंशियल हिस्ट्री हैज बीन फुल ऑफ एट्रोसिटीज, बिट्रेयल. They'll never believe. And this is one of the basic reasons we are unable to make sure that they trust us. And this is one of the basic reasons why there is so much such violence and Naxalism taking place. ठीक है? So again, you cannot separate. Even if suppose I am what today or there is Naxalism, we can go back in time and we can find out what events have occurred due to which the person is as it is today or the culture is as it is today. ठीक है, और बहुत सारी चीजें, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं. हैव यू सीन मंगोलॉइड रेस? मंगोलॉइड रेस कौन सा होता है? हिल्स, माउंटेन्स का जो रेस होता है. इंडिया में वी फाइंड मंगोलॉइड्स आर प्रेजेंट वेयर? दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालयाज में, नॉर्थ कश्मीर में भी मिलते हैं, पर्टिकुलरली लद्दाख रीजन. ठीक है, एंड हिमाचल में एंड उत्तराखंड में. सो यू माइट हैव सीन दैट देयर आईज आर स्मॉल, ऐसे बंद रहता, देखा है? So why it has happened? If you have to understand what is today, you'll have to go back in the past. So basically their evolution, genetic evolution occurred in the Mongolian region, where there is presence of which desert? गोबी डेजर्ट. ठीक है, और वहां पर जब वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा सैंड उड़ करके उड़ता है. ठीक है, तो इफ यू आर देयर, इफ यू आर गोइंग आउट, कैन आई से आपके पास दो रास्ते हैं. either you cover your face or the another way so that the sand doesn't enters your eyes, you'll keep your eyes half closed. ठीक है, so because they used to keep their eyes half closed, जेनेटिक इवोल्यूशन ने यहां पर मसल्स बना दिया जिसको बोलते हैं एपिकेंथिक फोल्ड्स. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एसेंशियली व्हाट हैपेंड, देयर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक. सो कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यू कैनॉट सेपरेट स्पेस फ्रॉम टाइम. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट, present is outcome of also what are the events which have occurred in the past. ठीक है, so this is the perspective of geography today when we are talking about the phenomena of space and time. ठीक है, I hope it is clear. तो ये बाद में देखेंगे कि ज्योग्राफी में डिबेट रहा है कि कुछ ज्योग्राफर्स का कहना है कि ज्योग्राफी को केवल स्पेस पढ़ना चाहिए, टाइम वाइम उसके काम की चीज नहीं. बट अदर्स वुड से नहीं, वी हैव टू स्टडी ऑल्सो द टाइम बिकॉज यू कैनॉट सेपरेट स्पेस एंड टाइम. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. अब इन सारी डिबेट्स में एक कॉमन चीज थी. देखो, व्हाट वाज द कॉमन थिंग? ये हमारी सोसाइटी की एक तरह से कह सकते हो नाइंसाफी भी है. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस.
ऑफ द सोसाइटी। होता क्या है कि वी आर मोर फैसिनेटेड बाय द थिंग्स विच आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो अगर एकेडमिक्स में मैं जाता हूं तो जो साइंसेज हैं उनका स्टेटस, देयर स्टेटस इज हायर दैन द स्टेटस ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, एंड दिस स्टेटस इज नॉट केवल इसी टर्म्स में नहीं कि ज्यादा इज्जत मिल रही है, ज्यादा पैसे भी उनको मिलते हैं। ठीक है, so if there is suppose some research to be done, they'll get more money compared to what funds will be allotted for research in humanities. ठीक है, so there is a bigger status of science. And why there is bigger status? Because everything we see around us, can we say it is the sciences which have made? ठीक है, so much life has become comfortable because of the sciences, the inventions that has taken place. Also it rises from a phenomena which is referred to as Renaissance. ठीक है, रेनेसा के बारे में सुना है? In Europe, you know, in medieval period there was dark ages. So in the dark ages, church was in total control, and church what it did, it curbed any kind of scientific inquiry, any rational inquiry. ठीक है, तो अगर मैं किसी रिलीजियस पर्सन से पूछता हूं कि भाई क्यों, why do you believe in God? Again there is just, it is what? It is a matter of faith. Okay, it is essentially a matter of faith. There is no scientific reason for that. There is no kind of rational reason for that. It is essentially a matter of faith. Many things which we do, उसके पीछे का लॉजिक पूछ लो, भैया क्यों कर रहे हो? ठीक है, many of the rituals which we are performing, many of our cultural practices, there is no scientific explanation for that. It is essentially a matter of faith. So dark ages में यही हुआ, the rationality was curbed. There was a reaction against this, and there rose the movement of Renaissance in Europe. ठीक है, so Renaissance जब आया तो Renaissance बिल्कुल it was against such kind of tendencies, such type of behavior. It was a reaction to those dark ages. तो वहां पर जब रेनेसा राइज हुआ तो इट वॉज बेस्ड अपॉन व्हाट? इट वॉज बेस्ड अपॉन रेशनैलिटी। ठीक है, एंड ये रेशनैलिटी क्या था? दिस रेशनैलिटी एसेंशियली मीन्स दैट देयर इज एसेंशियली अ कॉज टू एवरी फिनोमेना दैट वी सी. देयर इज ऑलवेज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, so you know, Protestant cultures आए, they were the main cultures which promoted this Renaissance, and it was all based upon this rationality. ठीक है, यही rationality, so this was essentially the idea of rationality. This rationality took the form of what we call it as modernism. It essentially became modernism. ठीक है, so that means अगर आप rationally सोचते हो, if you are thinking with respect to cause and effect, you are essentially what? You are modern. You are a rational person, you are a modern person. If you cannot do that, that means you are what? You are backward. Do you get my point? ठीक है, तो academics में ऐसा कौन सोचता है? Can we say it is the natural sciences? ठीक है, and because of that they were treated as more modern. Unfortunately, humanities, who were studying the human phenomena, which is a very variable phenomenon, in that case there is no fixed cause of everything. ठीक है, even if there is, it is very difficult to find. So they could not establish themselves on these lines initially, cause and effect. So they were always given a second grade citizenship, and as a result their status remained low. ठीक है, फिर आता है 20th century, उससे पहले 18th-19th century में भी in fact there rose a philosophy of positivism. ठीक है, तो पॉजिटिविज्म फिलॉसफी क्या कहता है? वो कहता है कि साइंस जो है वो साइंस इसलिए बना
क्योंकि उसने ऑब्जेक्टिव चीजों पर फोकस करना चालू कर दिया. दैट इज वाई इट बिकेम अ साइंस. दैट मीन्स इट बिकेम साइंस because it adopted a methodology. इसका मतलब है कि अगर दूसरे सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो अडॉप्ट द सेम मेथोडोलॉजी, देन व्हाट विल हैपन? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल ऑल्सो बिकम साइंस. ठीक है. So this debate began in the humanities that if we also want to have better status, if we also want to have more money, what we have to do? We have to become scientists. ठीक है. And that is why this always two ways of looking at the phenomena crept into these humanities. तो ये सेम चीज हमें ज्योग्राफी में भी दिखाई पड़ती है. तो ये सारी चीजें इसी वजह से एमर्ज हो रही है. अब आते हैं फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर. तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की. Physical geography. So physical geography is basically what? Physical geography, we can simply say it is the study of the environment. Study of the environment. In fact, यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं इसमें. फिजिकल एनवायरनमेंट. देखेंगे एनवायरनमेंट तो कैन वी से एनवायरनमेंट के कई डायमेंशंस हो सकते हैं. कैन देयर बी ऑल्सो अ कल्चरल एनवायरनमेंट, कैन देयर बी ऑल्सो एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. सो it is essentially the study of physical environment. And if we look into the physical environment, can we say that there are certain variables of this physical environment? One of the variable of this physical environment is land or the lithosphere. Similarly, can we say one of the variable is the atmosphere, one of the variable is hydrosphere, and one of the variable is biosphere. So what is happening? These are all interlinked to each other. Remember, geography is a science of integration. So it tries to study that how they are integrated to each other. Okay. So what geography is studying? It is studying these individual components and their interlinkages. Okay. So that is the main domain of study of physical geography. So it is concerned with what? It is concerned with physical environment. इसको मैं elaborate और कर सकता था. We can say that it is concerned with the study of elements of physical environment and their relationship. Physical environment and their relationship. So this is what we mean by physical geography. अब देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है. Human geography is essentially, it is the study of human and environment, or human environment and
human society relationship. ठीक है. So what is the core theme of human geography? The core theme of human geography is essentially study of the human and environment relationship. This is the basic study which we do in human geography. ठीक है. सो फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाई देयर आर माउंटेन्स, वेयर दे आर, हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, और प्लेन्स और प्लेटूस और रिवर्स, और इफ यू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, हाउ इट इज बिहेविंग, व्हाट इज द क्लाइमेट. ठीक है. सो वी आर मोर फोकसिंग अपॉन दीज फिजिकल एस्पेक्ट्स. हियर वी आर सीइंग how humans and environment are interrelated to each other. ठीक है. तो अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, सपोज मैं पढ़ रहा हूं इकोनॉमिक ज्योग्राफी सपोज, और अभी हमने बात की थी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो कहीं पर अगर इंडस्ट्री लोकेटेड है, इज इट रिफ्लेक्टिव ऑफ द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप? वी वर टॉकिंग अबाउट दैट रॉ मटेरियल. So why that raw material is found at only that place or at a particular place? Can we say it is outcome of the environment? ठीक है. It is controlled by the environment. So it reflects what is the relationship of human beings with the environment. Take other thing, we'll study about settlements. ठीक है. और इंडिया में अगर हम देखें पर्टिकुलरली रूरल सेटलमेंट्स में अभी चेंज होने लगा है, बाद में बताऊंगा उसके बारे में. बट ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो सारे के सारे गांव में अगर जाओगे तो एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा सारे घरों में. व्हाट इज दैट कंसेप्ट दैट विल बी फाइंडिंग? विल फाइंड दैट देयर इज द कंसेप्ट ऑफ आंगन, कोर्टयार्ड. ठीक है. लगभग सभी इंडियन विलेजेस के जो हाउसेज होते हैं उसमें तुम्हें कोर्टयार्ड मिलेगा. अब कोर्टयार्ड क्यों होता है? Because India is essentially a tropical country. If India is a tropical country, can we say that there will be, the temperature will be hot? यहाँ पे गर्मी होती है. And if there is a open space, generally क्या होता है, जो houses जो होते हैं, rooms, their doors and windows open towards the courtyard. ठीक है. So what will happen? There will be circulation of air, and because of that, the rooms can remain cool. Although today the pattern is changing, अब वहां पर भी AC and coolers आने लगे हैं, so there is a change taking place there also. But that is the kind of tradition. So when we are talking about the houses, the type of houses, can we say it is reflective of the human environment relationship? Obviously yes. ठीक है. Similarly हम देखेंगे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं तो वहां पे जो गांव की जो झोपड़ियां होती हैं उसमें इस तरह का कोनिकल रूफ होता है. ठीक है. जब हम फर्दर वेस्ट की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलरली ये वेस्ट बंगाल बिहार वाला जो एरिया है, देयर यू विल बी फाइंडिंग देयर विल बी स्लोपिंग रूफ्स लाइक दिस. ठीक है. जब हम फर्दर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जो रूफ, पर्टिकुलरली जो राजस्थान सेमी डेजर्ट रीजन है, there the roofs will become flat. As we go again towards Rajasthan desert area, the roofs will again become sloping. Himalayas में जाएंगे तो again we'll be finding the roofs will be sloping. So why it is so? Northeast में there is too much precipitation taking place. So there the roofs have to be conical. As you go in the Bihar and West Bengal region, there the precipitation is between 100 to 200 centimeters. So there the sloping roof. As we are going in the semi-arid region, there you need to conserve water. So there is a more flatter roof which is found. As we are going in the desert region, there is lots of sand which can get accumulated because there are shifting sand dunes present. So essentially what is happening, there is again sloping. Himalayas mein there is snowfall.
ठीक है. So again there is sloping roof. So can we say that this, when we are talking about the houses, is it reflective of the human and environment relationship? Obviously it is. ठीक है. Various forms of cultural practices that we do, it is again reflective of what? It is reflective of our relationship with the environment. ठीक है. So whatever we are doing, whatever we are studying in human geography, all of these things are reflective of the human and environment relationship. हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं. लाइक टेक द केस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. हिस्ट्री में पढ़ोगे, कल्चर में, तो यू विल बी फाइंडिंग ऑलवेज एसोसिएटेड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर इज वाटर. ठीक है, उसके साथ वाटर हमेशा रहेगा. फाउंटेन्स मिल जाएंगे जहां पर भी इस्लामिक आर्किटेक्चर हो. क्यों ऐसा है? बिकॉज दिस इस्लामिक कल्चर ओरिजिनेटेड वेयर? इन मिडिल ईस्ट, विच इज एसेंशियली अ डेजर्ट रीजन. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. अ पर्सन हु हैज वाटर देयर is rich. So water is essentially what? It is symbol of richness. So that is why you will be finding that always in this type of architecture there will be it will be associated with water. ठीक है. So whatever geography we are studying or whatever human element we are studying, will always be finding it will have some reflection of the human and environment relationship. ठीक है. So this is the core of study of human geography. Although we can say today, आज के टाइम में क्या हुआ है, ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दिया. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी एडवांस्ड. ठीक है. So can I say दिस इज द वर्ल्ड. ठीक है. तो बहुत पहले जाएं, जब केवल घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी होती थी. कैन आई से द वर्ल्ड वॉज बिगर? अगर मुझे कहीं से कहीं जाना है, वर्ल्ड वॉज बिगर. आज मैं गांव में जब जाता हूं, तो द प्लेसेस वेयर आई कैन रीच इन मैक्सिमम 30 to 1 hour. माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज कि अगर हमें वहां जाना होता था तो हम लोग सुबह सुबह निकलते थे ताकि रात तक पहुंच जाएं, क्योंकि उनको पैदल जाना होता था. ठीक है. वाई? बिकॉज दैट टाइम द टेक्नोलॉजी वॉज वेरी वेरी प्रिमिटिव. टुडे द टेक्नोलॉजी इज वेरी डेवलप्ड. सो दिस हैज बिकम द वर्ल्ड टुडे. इट इज बिकमिंग इवन मोर स्मॉलर. आई एम taking the lecture here right now on YouTube. People are watching me, I don't know from where and where. ठीक है. So what we have done, we have reduced space and time. ठीक है. So what is essentially happening? Traditionally human geography का जो scope था, traditionally it was study of the human environment relationship. But as the society has evolved, as the human beings have evolved, can we say कि धीरे धीरे हमारा जो कंट्रोल है एनवायरनमेंट पे वो बढ़ने लगा है? Yes or no? We have begun to control many aspects of nature. Today you see many of the cultures which actually evolved with specific geography in specific environment, those cultures we are also following. ठीक है. There is globalization of cultures has taken. तो एक छोटा सा एग्जांपल लो. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम शहरों में आवर वॉशरूम्स, देयर इज अ सिस्टम ऑफ फ्लश. ठीक है. फ्लश करते हैं, कितने लीटर पानी जाता है? टू मच. ठीक है. एटलीस्ट इट इज 20 to 40 लीटर्स वाटर इज गोइंग. कैन यू इमेजिन ये कल्चर कहां पर
डेवलप हुआ, ये कल्चर डेवलप हुआ यूरोप में, ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्रीज। इन वेस्टर्न कंट्रीज this is the relationship which exists. This is the population. अब मैं इंडिया में देखूं, this is the kind of relationship that we have. Can you imagine how much now human beings are controlling? Environment has become insignificant here. Although we'll see that इसकी वजह से हम problems face कर, ठीक है, but whatever, that culture has permeated, that culture is now established here as well. So what has been the evolution of human geography? Traditionally it was study of just human environment relationship, but now we can say that it is not only human and environment relationship, but also human and society relationship, ठीक है. So all of these things we are studying where? We are studying in human geography. I hope it is clear. ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में कि डिफरेंस क्या है. Okay, I'll give you 2 minutes. Brainstorm and try to think what could be the difference between physical and human geography. So you have got 2 minutes. और मैं इधर YouTube पे बात करूंगा तो तुम लोगों का ध्यान इधर नहीं आना चाहिए. Manmeet, it will go into groundwater.
RCBN, it is working. I can see what you're writing. But I have given you time to brainstorm and write in your copy, not in the chat box. Okay, guidance happening. It is not open in front of me. ठीक है, उसको कल से मैं बोलता हूँ, they'll open it. I got your point. After the class, I'll tell them to look into it. Okay. So physical and human geography, they are quite different. Like for example, can I say एक difference is on the basis of what? Subject matter of study. Here, what was the subject matter? It was environment or environmental elements and their relationship. Here, if you talk about human geography, it focuses upon study of human environment and human society. Human society relationship. So this is one difference between the physical and human geography के बीच में. ठीक है. Philosophical base में भी difference. ठीक है. What is the difference in the philosophical base? Physical geography की अगर हम बात करें तो it is more based upon the philosophy of determinism. अभी हमने बात किया था. It is essentially based upon the philosophy of determinism. While if you talk about human geography is more conditioned by metaphysical humanism. मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म, दोनों में डिफरेंस. डिटर्मिनिज्म हमने देखा था, इट इज बेसिकली व्हाट एक्सटर्नल एजेंसीज आर कंट्रोलिंग द एक्शन, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज ऑलवेज अ कॉज लोकेटेड इन द एक्सटर्नल विच कैन बी फाउंड. मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म क्या कहता है कि इट इज अ फिलॉसफी विच सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक स्पीशीज. ठीक है. हाउ दे आर यूनिक स्पीशीज? दे आर इन फैक्ट सुपीरियर स्पीशीज. So it believes that God specially created human beings to take care of this world. ठीक है. तो भगवान के पास कोई काम नहीं था, छुट्टी ली और सोचा कुछ बढ़िया बनाते हैं. And he came up with the human. Can you understand? This itself shows कि भगवान में भी weaknesses हैं. So that this philosophy is essentially what? It is metaphysical humanism philosophy. और इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो here place of humans. Place of humans. So what is the place of humans in physical geography? Can we say humans are treated as just another species? ठीक है. So here humans are treated as just another species. For example, if you take an example, can we say in nature, in biogeography,
extinction is law of nature. ठीक है? That means any species which is born or which has developed or evolved, at a point of time it will become extinct. ठीक है? So if we go by physical geography, if we go by environmental geography, can we say this rule will also apply to the human beings? There will be extinction of the human beings. ठीक है? So humans are just what? They are treated as just another species. No special status is given to human beings. ठीक है? But in human geography, as the name itself suggests, there is a special status of human beings. They are considered as what? They are considered as superior species to nature. ठीक है? So there is the difference of the place of the human beings. Then there are other differences which are also there. Like for example, if you talk about more suitable approach. Again, I am saying more suitable approach. I am not saying that this approach only. I am saying more suitable approach. So for physical geography, which is the more suitable approach? It is systematic approach. Systematic or the scientific approach. You can understand कि ऐसा क्यों है. Can we say because there is difference in the nature of the two subject matters? ठीक है? Physical world में can we say कि एक ही result बार बार आने की चांसेस ज्यादा है? ठीक है? अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूं, कैन वी से कि ये नीचे जाएगा? अगर मैं सड़क पे जाके ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? तो भी नीचे जाएगा. अगर मैं अमेरिका पहुंच के जाकर के ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? तो भी नीचे जाएगा. नो मैटर वेयर एवर आई गो एंड ड्रॉप दिस पेन, इट विल ऑलवेज गो डाउन. दैट मीन्स द सेम रिजल्ट बीइंग रिपीटेड. द प्रोबेबिलिटी इन द फिजिकल वर्ल्ड इज द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज वेरी हाई. ठीक है? एंड कैन वी से कि अगर ऐसा है तो हम इसमें कॉमन पैटर्न्स निकाल सकते हैं, लॉस बना सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं. ठीक है? तो इसका मतलब कौन सी अप्रोच ज्यादा सुटेबल होगी? सिस्टमैटिक अप्रोच. द साइंटिफिक अप्रोच विल बी मोर सुटेबल. बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ज्योग्राफी, टेल मी, क्या ये सेम चीज हम ह्यूमंस के बारे में बोल सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट. अभी मेरी थिंकिंग कुछ और है. 2 साल पहले मैं कुछ और सोचता था ऑन द सेम टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट. 10 साल पहले और चला जाऊं, 15 साल टीन एज में चला जाऊं तो अलग ही कहानी. तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इन ह्यूमन बीइंग्स सेम रिजल्ट का रिपीट होना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है? So that means which approach is more suitable for human geography? It is regional or the philosophical. Regional or the philosophical approach. ठीक है? So that is one basic difference between them. Methodology of study. ठीक है? मेथोडोलॉजी और अप्रोच में डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी? अप्रोच इज द ब्रॉड आइडिया, पर्सपेक्टिव. ठीक है? फिलॉसफी.
दैट इज बेसिकली अप्रोच। मेथोडोलॉजी क्या होता है? इट इज अ टूल और अ वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट इज द मेथोडोलॉजी। तो फिजिकल ज्योग्राफी की मेथोडोलॉजी कैसी है? इट इज मोर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ठीक है। और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दो तरीके की होती है। कौन सी होती है दो तरीके की? इट इज, वन इज डिडक्टिव एंड अदर इज इंडक्टिव। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ठीक है। इसके बीच का मैं डिफरेंस बता देता हूं। डिडक्टिव में क्या होता है? वी इन बोथ दीज केसेस वी आर मेकिंग लॉ और जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। बट डिडक्शन में हम दूसरे तरीके से ये काम कर रहे हैं, इंडक्शन में हम दूसरे तरीके से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिडक्शन को पहले देखते हैं। डिडक्शन में सपोज एक आइडिया है कि कोस्टल सिटीज आर मोर डेवलप्ड। कैन वी एग्री विद दिस मोर और लेस? यस और नो? ज्यादा रिसोर्सेज है, सी की मोबिलिटी मिल रही है, ठीक है। बाहर से इंफॉर्मेशन, लोग आ रहे हैं तो अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सो कोस्टल सिटीज आर मोर डेवलप्ड। इफ वी लुक इनटू साउथ इंडिया, और कोस्टल सिटीज के बजाय कोस्टल एरियाज लेते हैं, साउथ इंडिया, वी places if you talk about in South India, they are not very far from the coast. Yes or no? ठीक है। So can we say on the basis of this main argument, क्या मैं इसके बेसिस पे डिड्यूस कर सकता हूं एक assertion, literacy increases towards south, ठीक है। सो एक बड़े जनरलाइजेशन से मैंने क्या किया, एक दूसरा जनरलाइजेशन उससे ड्रॉ किया, डिड्यूस किया। तो दिस इज बेसिकली व्हाट? इट इज डिडक्शन, ठीक है। सीसैट में तुम लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा डिडक्शन के बारे में। तो दैट इज बेसिकली व्हाट? दिस इज डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? सपोज मैं स्टडी कर रहा हूं पूरे इंडिया को, मैंने क्या किया? सेंसस, ठीक है। अलग अलग लोगों से पूछा, बातचीत की और इंफॉर्मेशन गैदर किया। फ्रॉम दिस सेंसस आई कंपाइल द डाटा एट विलेज लेवल, फिर उससे जनरलाइज करके मैं ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाटा को जनरलाइज किया, और इसके बेसिस पे अब मुझे ये सेम असर्शन मिलता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज रेफर टू एज इंडक्टिव। आई एम इंड्यूसिंग अ न्यू आइडिया, ठीक है। जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा तो उसने एक नया आइडिया इंड्यूस किया ग्रेविटी का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? इंडक्टिव। फिर बाद में क्या हुआ? उसी आइडिया से, वो बड़ा आइडिया, मेन आइडिया बन गया, उसी आइडिया से बहुत सारी अदर आइडियाज या फिर लॉज, थ्योरीज इमर्ज हुई, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट? डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, प्लेट्स, दे आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, क्या हो रही हैं? दे आर सिंकिंग इनटू द मैंटल। व्हाई दे आर सिंकिंग इनटू द मैंटल? बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग देम डाउन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज डिडक्टिव, ठीक है। तो साइंस की जो मेथोडोलॉजी है वो कैसी है? साइंटिफिक, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो मेथोडोलॉजी है, इट इज मोर philosophical. Although human geography, maybe they tried to adopt the scientific methodology, ठीक है।
So although it has also tried to adopt a scientific methodology. Adopt scientific methodology. इनफैक्ट बाद में देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पीरियड था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट वाज फाउंड कि सारे डिसिप्लिन्स ने वॉर एफर्ट्स में कुछ ना कुछ हेल्प किया इन अमेरिका, बट ह्यूमन ज्योग्राफी कुछ नहीं कर पाया. पर्टिकुलरली ह्यूमन ज्योग्राफर्स, देयर रोल इन द वॉर एफर्ट्स वाज नेग्लिजिबल. तो आफ्टर द वॉर सोसाइटी बिगैन टू आस्क अ क्वेश्चन की ज्योग्राफी की जरूरत क्या है, पर्टिकुलरली ह्यूमन ज्योग्राफी की. फालतू का सब्जेक्ट है, हटाओ इसे. इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इट बिगैन टू बी ड्रॉप्ड एज अ डिसिप्लिन. तब ज्योग्राफर्स के होश खुले और दे थॉट कि अब इसको कैसे बचाएं. एंड वन वे was to show that our subject is also science. So they imported certain philosophies and tried to develop human geography on scientific lines. This period बाद में देखेंगे, इसको बोलते हैं quantitative revolution. ठीक है. So it has also tried to adopt this methodology and it has tried to bring synthesis. ठीक है. So there is also difference in the methodology of human and physical geography. So these are the primary differences between the physical and human geography. ठीक है. I hope it is clear. कुछ कुछ समझ में आ गया होगा. ये और डिटेल में जब बाद में पढ़ेंगे perspectives in human geography में, we will be studying it in more detail there. So it will become more clear. So that is basically what that is your physical and human geography. But इतनी डिबेट के बाद एक बात समझ में आई होगी तुम लोगों को अभी तक कि ज्योग्राफी में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लड़ाइयां होती रही. और इन्हीं लड़ाइयों को अभी जो हमने देखा था डाइकोटॉमी और डुअलिज्म बोलते हैं. अब इसमें भी एक दो वर्ड्स हैं, डाइकोटॉमी एंड डुअलिज्म. ठीक है. तो डुअलिज्म को अगर मैं बात करूं तो डुअलिज्म इज लाइक यू कैन से रिलेशनशिप बिटवीन अ काइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ. हर रोज झगड़ा करते हैं बट they live together. So that is basically what that is essentially dualism. But suppose there can be occasions when this fight becomes so much strong that they get divorced. ठीक है. And then what happens? They will begin to live separate. So this situation is referred to as dichotomy. ठीक है. तो ये डिफरेंस है डुअलिज्म डाइकोटॉमी. कैन वी से डुअलिज्म तो अच्छी बात है, कभी कभी झगड़ा भी होना चाहिए वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी. मोर इंपॉर्टेंटली विथ डुअलिज्म नॉलेजेस में क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ डिबेट. एंड कैन वी से कि डिबेट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. तो इट इज गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी डिसिप्लिन, बट समटाइम्स इट कैन बिकम डाइकोटॉमी एंड इट इज प्रॉब्लमेटिक. ज्योग्राफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है अकॉर्डिंग टू कांत? ही बिलीव कि ज्योग्राफी की एक बहुत बड़ा इशू ये है, ज्योग्राफी स्टडीज सो मेनी थिंग्स. इट इज स्टडिंग सो मेनी सब्जेक्ट मैटर्स, नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट मैटर. और जब ऐसा होता है किसी डिसिप्लिन के साथ, तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज ज्योग्राफी. So suppose we are talking about physical geography में there is geomorpho, there is climatology, oceanography, biogeography, economic geography, population and settlement, political geography, cultural geography. You know, all of these subjects have their counterparts, all of these branches have their counterparts. There is
जियोलॉजी, देयर इज मीटियोरोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, ऑल साइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो कांत का ये कहना था कि सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस, विद द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी देयर इज स्पेशलाइजेशन टेकिंग प्लेस। कैन वी से हमारी सोसाइटी में भी हुआ है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हुई। So same thing also happens in disciplines. So जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, what will happen? Branches of geography they will specialize. So the geographers who are studying geomorphology, some of them will think कि बेटर है कि मैं geomorphology में स्पेशलाइज करके geomorphologist बन जाता। Some would become climatologists, some would become ocean geographers, some would become biogeographers, ठीक है। So there will be more specialization. As there is more specialization, can I say कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा? Yes or no? ठीक है। So essentially what will happen? The distance between the sister disciplines, it would reduce. But can we say कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। It will keep on growing. So there can be a scenario कि ये जो branches हैं ये अलग हो जाएंगे, they'll become separate disciplines or they will merge with their sister disciplines, ठीक है। And this has been always a kind of threat in geography. So Kant highlighted it. और ऐसा हुआ, कैन वी से तो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, देयर विल बी नो ज्योग्राफी। तो इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। और इसीलिए ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट का ओरिजिन हुआ। एंड व्हाट वाज दिस कंसेप्ट? दिस कंसेप्ट वाज द कंसेप्ट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। सो ज्योग्राफर्स जो होते हैं उनका एक एम होता है टू अचीव सिंथेसिस ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं एक लॉ बनाता हूं और उस लॉ से अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड को भी एक्सप्लेन कर सकूं और ह्यूमन वर्ल्ड को भी एक्सप्लेन कर सकूं, कैन आई से इट इज अ काइंड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सिंथेसिस। सो इन ज्योग्राफी इट हैज बीन ट्राइड, but definitely because there is difference in the nature of the subject matters, it is not so much easy, but several geographers have tried. हमारे लिए क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी कॉपी कौन चेक कर रहे हैं? जोग्राफर्स चेक कर रहे हैं। और उनका एम क्या है? व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, फाइनल ऑब्जेक्टिव? टू रीच दिस सिंथेसिस। If in our answers we can show this kind of synthesis that there is always physical and human geography अलग अलग नहीं है, ठीक है। Even if I am writing answers of physical geography, despite the differences that we talked about, we always try to synthesize things. Can we say there is a better possibility that we'll get better marks? ठीक है। Definitely there is a greater possibility that we'll be getting better marks. One of my students who got rank 5, he got 327 marks in geography. So I asked him what were the things which you did differently. So he told me कि सर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में भी जितने कंक्लूजन्स लिखे थे सबको ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक किया, क्योंकि जो क्लास में आपने सिंथेसिस वाला कंसेप्ट पढ़ाया था वही मैंने अप्लाई किया, और सारे के सारे कंक्लूजन्स मेरे अल्टीमेटली ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड कि इस फिजिकल फिनोमेना का ह्यूमन से क्या रिलेशन, ठीक है। सो देयर इज नो डाउट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, बट हमेशा हम क्या करने की कोशिश करेंगे?
एट द एंड विल ट्राई टू सिंथेसाइज थिंग्स. जोग्राफर्स की एक खास बात होती है, एंड व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग अबाउट जोग्राफर्स? जोग्राफर्स आर ट्रेन्ड टू बी बैलेंस्ड पीपल. ठीक है, दे आर ऑलवेज फॉर दैट बैलेंस, दे आर ऑलवेज फॉर दैट सिंथेसिस. इसीलिए ज्योग्राफी में जब जोग्राफर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा, तो हमेशा जो फिलॉसफी रही है वो रहा डुअलिज्म, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. इवन इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दे विल स्टिल रेस्पेक्ट द अदर ओपिनियन. ठीक है, बिकॉज दे वर ट्रेन्ड टू बी बैलेंस्ड पीपल. बाद में देखेंगे ज्योग्राफी में डाइकोटॉमीज भी आई, बट डाइकोटॉमीज कब आई? जब आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी के अंदर आया. when there were economists who became geographers, when there were historians who became geographers, then there was rise of dichotomy. ठीक है, so what is the perspective of geography? The perspective of geography is a balanced perspective. We have to always maintain that balance, never take one side. ठीक है, so this is essentially the nature of the physical and ह्यूमन ज्योग्राफी. और इसीलिए यू कैन अंडरस्टैंड, और ये जो मैंने सिंथेसिस की बात की, नाउ इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर सिलेबस. ठीक है, हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर सिलेबस? if we look into the syllabus of geomorphology, can you see there is applied geomorphology? Syllabus was changed in 2008. So since then, this topic has been now even added as a part of geomorphology, applied geomorphology. When we are talking about applied, are we talking about the use of the knowledge for the benefit of society? ठीक है, so there is applied geomorphology. Same thing if you look into climatology, there is global climate change and the role and response of man in climate change. Applied climatology and urban climate. ठीक है, ओशनोग्राफी में भी अप्लाइड थीम्स है, लाइक लॉ ऑफ सी एंड मरीन पोल्यूशन. ठीक है, सो इट इज नाउ रिफ्लेक्टेड इन द सिलेबस इटसेल्फ, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, so this is the nature of physical and human geography. अब आते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट, तो अब फिजिकल ज्योग्राफी पर आते हैं. ठीक है, पेपर 1 का नेचर समझ में आ गया. इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी. और प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? साइंस. प्रिंसिपल्स कहां पर होते हैं? साइंस में होते हैं. और जब साइंस का एग्जाम होता था, तो कैन आई से कि हमारी कहानी कुछ ऐसी होती थी, या तो आता है या तो नहीं आता है. ठीक है, सिंपल है. सेम फंडा यहां पर भी होता है. अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं पेपर 1, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनफ मार्क्स इन पेपर 1, दैट मीन्स यू हैव सब्जेक्ट मैटर डेफिसिट, यू हैव डेफिसिट ऑफ कंटेंट, यू नीड टू अपग्रेड योर कंटेंट, बिकॉज ईदर यू नो और यू डू नॉट. प्रीवियस ईयर में 3 बार क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रक्चर इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. ठीक है, 2000 आई थिंक अभी लास्ट का पूछा है, 14 या 18 में पूछा, लास्ट जब पूछा. कैन यू इमेजिन कि अभी भी स्टूडेंट्स जाते हैं और दे विल राइट एनीथिंग ऑन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स गए क्लास में, एग्जाम में, मेनी केम बिकॉज दे कम लेटर ऑन, और फिर वो 500 प्लस ज्वाइन करते हैं, दे टॉक टू मी. तो पता चलता है कि दे हैव रिटन कि सर वो ये वाला तो मेरा अच्छा हुआ था. मैंने पूछा क्या अच्छा हुआ था, बताओ क्या लिखा था उन्होंने. मैंने इसमें पेंग को लिंक करके अच्छा सा लिख दिया. कमाल है यार. इफ यू नो जियोमॉर्फोलॉजी, पेंग को इज अ जोग्राफर हु वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर नेग्लेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, रोल ऑफ स्ट्रक्चर. क्यों लिख दिया? क्योंकि सविंदर सिंह में एक जगह पर पेंग ने स्ट्रक्चर का मेंशन कर रखा, और क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं गया. जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर वाज अ सेपरेट स्कूल इन जियोमॉर्फोलॉजी. और स्ट्रक्चर के 3 एलिमेंट्स, 3 उसके एस्पेक्ट्स होते हैं.
which have to be included in your answers. ठीक है, there is lithology, there is aspect and there is characteristic. So there are 3 elements of structure. और अगर आपने ये तीनों नाम नहीं लिखे, लिथोलॉजी, एस्पेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनको एक्सप्लेन करके इनके एग्जाम्पल्स के साथ नहीं बताया है कि हाउ इट विल कंट्रोल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, विल नॉट गेट मार्क्स. नो मैटर आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, नो मैटर आपने चारों पेज भर दिए, मैं अगर चेक कर रहा हूं तो मैं तो 0 दूंगा. ठीक है. सो इन पेपर 1 इट इज अबाउट यू नो और यू डू नॉट नो. ये जितने लोग भी कह रहे हैं ना कि मुझे मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं और ऐसा है वैसा है, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, दे हैवंट स्टडीड प्रॉपरली. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ वाटर. बायोज्योग्राफी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सिलेबस में टॉपिक है देयर इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं उसको. अब वहां पर एग्जाम में स्टूडेंट्स जाते हैं एंड दे आर राइटिंग व्हाट, दे आर राइटिंग कोपेंस का क्लासिफिकेशन, थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहां पर उसने प्लांट को बेसिस मान करके क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कर. ठीक है, इसका मतलब आपने ये टॉपिक सही से पढ़ा ही नहीं था. अगर आपने ये टॉपिक सही से पढ़ा होता, you would already have a ready-made answer with you. Haven't you studied about xerophytic plants? ठीक है. Similarly, there is mesophytic, there is hygrophytic. ठीक है, उसके बारे में लिखना था, उनकी characteristics with example. That was what was needed. And what you are going and doing. कोपेन लिख दिया, त्रिवार्था लिख दिया, थॉर्नवेट लिख दिया, और उसके बाद घर पे आकर के उसमें 10 में से 4 नंबर जोड़ भी लिए. यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड. तो दिस इज द नेचर ऑफ पेपर 1. ठीक है. फिजिकल ज्योग्राफी इज वेरी ऑब्जेक्टिव. फिजिकल ज्योग्राफी में व्हाट हैज हैपेंड इन फिजिकल ज्योग्राफी इज, कुछ टाइम के लिए फिजिकल ज्योग्राफी हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर सम टाइम, बिकॉज बिटवीन 2009 till 2018 questions of physical geography used to be quite tough. ठीक है. And particularly if you talk about questions from geomorphology, used to be quite tough. This is one of the reasons why students were poorly performed. जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन सबसे पहली बात तो पहले होते हैं, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस. ठीक है. दूसरी बात ये होती है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम देते हैं, दे आर गिविंग टू मच टाइम इन जियोमॉर्फोलॉजी, बिकॉज क्लासेस में टाइम दिया गया तो एक दिमाग में पर्सपेक्टिव आ जाता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तभी इतना टाइम दिया गया. अब उसके बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप जाओ एग्जाम में and the questions become difficult, what will happen? Other areas आपने वैसे नहीं पढ़ा था ढंग से, तो वहां पर तो वैसे ही कम मार्क्स आएंगे. You relied on it, it betrayed you. So this is essentially what was happening during this period. और ज्यादातर की कहानी यही थी, फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा फोकस करते थे, उसमें भी जो जियोमॉर्फोलॉजी, एंड दे यूज्ड टू गो इन द एग्जामिनेशन एंड राइट. और एग्जाम में पहुंच के क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है जियोमॉर्फोलॉजी का, फिर भी एक मॉरल ग्राउंड पे उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आधी जिंदगी बिता दी उसको पढ़ने में. ठीक है. तो दिस वाज द एसेंशियल प्रॉब्लम. अभी भी मैंने इस बार 500 प्लस में जियोमॉर्फोलॉजी लास्ट में रखा है, लास्ट में. और मैंने स्टूडेंट्स को लॉजिक दिया, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें तुम फंस जाओगे तो फिर तुम्हारा ज्योग्राफी खत्म नहीं हो पाएगा. ठीक है. बट स्टिल स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास कि सर क्या मतलब ये स्ट्रैटेजी ठीक है. मैंने कहा यार दिमाग लगा के थोड़ा सोच. ज़्यादा ज़्यादा जियोमॉर्फोलॉजी सिलेबस का कितना पार्ट है? इट इज़ पेपर 1 का 10%. ठीक है.
देयर इज अदर 90%। जियोमॉर्फोलॉजी से केवल 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक ही कंपलसरी होता है। यू ऑलवेज हैव द लिबर्टी टू लीव दैट, और वो जो एक कंपलसरी वाला आता है वही बाउंसर आता है, वो वैसे ही छूटेगा। बट उस जियोमॉर्फोलॉजी को प्रिपेयर करने के चक्कर में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जियोमॉर्फोलॉजी, द सेम अमाउंट ऑफ टाइम में क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजोग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी सब हो जाए। सो टेल मी विच इज अ मोर एफिशिएंट वे। कैन वी से कि इसको पहले प्रिपेयर कर लेना, एक कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा, 4 टॉपिक तैयार कर लिए कंपेयर टू वहां पर एक ही टॉपिक हुआ। ठीक है, तो ये जो परसेप्शन है ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। तभी ज्योग्राफी में हम कुछ चेंज कर पाएंगे रिजल्ट्स के टर्म। जियोमॉर्फोलॉजी ठीक है, इट इज अ वेरी साइंस लाइक ब्रांच और बड़ा मजा आता है पढ़ने में, ऑल गुड, बट when you look at the ROI, it is not as high as these others. ठीक है, सो फिजिकल ज्योग्राफी का फंडा हमारा बिल्कुल सिंपल रहेगा कि जियोमॉर्फोलॉजी विल टेक टाइम, और वो मैं क्लास में करवा दूंगा तुम्हें पूरा। ठीक है, यू शुड नॉट स्टडी एनीथिंग आउटसाइड द क्लास। जो क्लास में करवाया इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, उसके बाद बचता है बाकी रेस्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, विच इंक्लूड्स योर क्लाइमेटोलॉजी, विच इंक्लूड्स योर ओशिनोग्राफी, विच इंक्लूड्स योर बायोजोग्राफी, विच इंक्लूड्स योर एनवायरमेंटल जॉब। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ, हमने यहां पर ROI की बात की विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल। इफ आई टेक द ROI ऑफ GS, विच ऑफ दीज देयर इज मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन GS? कैन आई से यहां से आते हैं, प्री में उठा करके देख लो, जियोमॉर्फोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। वो लैंडफॉर्म्स पढ़ते पढ़ते कितने दिन निकल जाते हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। बट देयर इज एवरी ईयर अ क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली एक क्वेश्चन ओशिनोग्राफी से आता है। तो देयर ROI इज मच मच हायर। तो अगर हम टाइम यहां पर इन्वेस्ट करें ज्यादा रिवीजन में, तो ये मुझे ज्यादा बेटर रिटर्न्स देने वाले। ठीक है, बट हम ये नहीं करते, वी कीप ऑन डूइंग रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। ठीक है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, बट बहुत सारी जगह पर हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मेनी थिंग्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड। डोंट गो इनटू द बुक्स। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको रट लो। ठीक है, शॉर्टकट्स निकालो, उसको रट लो, उसके कीवर्ड्स बना लो, whatever, just try to mug it up. Don't go into the books, it will waste your very precious time. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर सपोज करो हम बायोजोग्राफी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमने जो क्लास में पढ़ा उसके अलावा इफ यू आर गोइंग एंड रीडिंग फॉर एग्जाम्पल शंकराइज बुक, एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक है, ठीक है, इफ यू आर रीडिंग दैट इट इज वेल एंड गुड, आई विल ऑल्सो एडवाइज कि हाँ पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसका ROI है। इफ यू लुक इनटू दिस ईयर देयर वर 14 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट इकोलॉजी, अभी जो प्री हुआ। ठीक है, बट नॉट हियर, यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीजें। तो ये अपना एक माइंडसेट यू मेक नाउ इटसेल्फ, सो दैट इवन इफ लेटर कोई टॉपर आता है और वो कहता है कि नहीं नहीं सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना चाहिए, so it doesn't changes. He does not have that much experience as I have. I have seen very highs and lows as well. ठीक है,
और ज्यादातर ये जो टॉपर्स ऐसे होते हैं, उनका रैंक, उनका अटेम्प्ट देखना, ऑलवेज इट विल बी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। किताब पढ़ के आप 1 साल 1.5 साल में कभी भी प्रिपेयर नहीं। सो द मोस्ट एफिशिएंट, द शॉर्टेस्ट पाथ इज व्हाट? चुपचाप जो क्लास है उसको करो, समझ में आए तो ठीक, नहीं आया तो मेमोराइज एंड गो इन द एग्जाम एंड राइट। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग फिजिकल ज्योग्राफी। अब जल्दी से कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। इफ यू टॉक अबाउट geomorphology, what is essentially geomorphology? Simply, geomorphology can be called as the study of landforms. It is study of the landforms, land and forms, यानी कि shapes of the land. ठीक है, so we find variable shapes of land on the earth surface. ठीक है, so this variability, if you talk about, it is outcome of what? It is outcome of interplay between two forces, endogenetic and exogenetic forces. Endogenetic forces are those forces which are originating from inside the earth, because inside the earth you can understand there are differences in temperature and pressure. So because of those differences in temperature and pressure, there is origin of these endogenetic forces. ठीक है, exogenetic forces, they are working from outside, they are more related with the climate, impact of climate. ठीक है, so interplay between endogenetic and exogenetic forces gives rise to the variable landforms present on the surface of the earth. ठीक है, does this means कि मैं जियोमॉर्फोलॉजी में दो पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं? ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, in fact 3 parts. So one is, I call it as the tectonic geomorphology. Tectonic geomorphology. Then second is, it is landform development, things related with the landform development. And third is the applied geomorphology. So the entire syllabus of geomorphology can be divided into these 3 segments. अगर मैं टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूं तो इसकी सबसे खास बात क्या है? इट इज एक्चुअली वेरी साइंटिफिक, इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, and it imports theories from geology, plate tectonics etc. तो बिल्कुल साइंस के जैसा, और इसलिए it is difficult to easy to understand and easy to remember. ठीक है, and also easier to answer. Unfortunately जो पीरियड मैंने बताया 2009 से 2018, उस पीरियड में out of 30 questions which were asked from geomorphology, only 6 were asked from here. ठीक है, that means 24 questions were asked from here, landform development. ज्यादातर क्लासेस में क्या करते हैं, वो टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी में ही घुमाते रहते हैं. ठीक है, दिस दे विल फिनिश इन 2 days. They will take majority of time in टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी क्लासेस. बट उस टाइम पर क्या होता था कि इसके क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे बिल्कुल सीधे, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं, एंड दैट आल्सो मेड अटेम्प्टिंग जियोमॉर्फोलॉजी डिफिकल्ट. Good thing for us, since 2018 you will be finding that every year there is at least one question out of 3 questions which are being asked in geomorphology,
एक क्वेश्चन टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा जाए, ठीक है, विच इज अ वेलकम ट्रेंड फॉर अस बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना इजी है कंपेयर टू दिस पार्ट, ठीक है। तो यहां पर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को समझना है तो डेविस का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है एंड इट सेज लैंडफॉर्म्स आर फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं एंड दैट क्रिएट्स लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो कैन यू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने तीन चीजें बोली थी स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज द लिथोलॉजी, हार्डनेस, टाइप्स ऑफ रॉक्स, it is also related with aspect, it is also related with characteristics which include like permeability, porosity, composition etc, ठीक है। तो that is characteristic, aspect जैसे slope, angle, folding, faulting, all these are included as the part of this aspect। तो ये जो एक था अब ये तीन बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं प्रोसेस को ब्रेक करूं तो प्रोसेस दो तरीके के हैं, अभी जो हमने देखा एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, ठीक है। एंडोजेनेटिक भी कई तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, लाइक देयर इज कैटास्ट्रॉफिक, देयर इज डायस्ट्रॉफिक, डायस्ट्रॉफिक में देयर इज ओरोजेनेटिक, एपीरोजेनेटिक, ठीक है। एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, डिपोजिशन, इरोजन के भी कई एजेंट्स ऑफ इरोजन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो जो डिवीजन हुआ था वो तीन, यहां पर डिवीजन बहुत मल्टीपल डिवीजन होते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस विच आर एट वर्क, ठीक है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, कितनी वैरायटी हो सकती है, कैन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, एंड सुपर इम्पोज द फैक्टर ऑफ टाइम विच इज वेरी सब्जेक्टिव ओवर इट, दिस पार्ट बिकम्स हाईली सब्जेक्टिव, ठीक है। इट बिकम्स क्वाइट सब्जेक्टिव, देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, सम से टाइम इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, तो डेविड सेज, और उसने कंसेप्ट निकाल दिया साइकिल ऑफ इरोजन। अदर्स दे डिसएग्री, वो कहते हैं प्रोसेस इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, लाइक जेटी हैक, तो ही डिस्कार्डेड द साइक्लिक स्कूल एंड डेवलप्ड द नॉन साइक्लिक स्कूल ऑफ थॉट। सिमिलरली देयर वर अदर्स जिनको इतना भाव नहीं मिल पाया, लाइक मार्लन पी बिलिंग, he stood for the role of structure although he never got such kind of recognition like the other two, ठीक है। so this part becomes more subjective compared to what this is, so you can understand, जो हमारे स्टार्टिंग के पहला टॉपिक छोड़ दें, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यू कैन सी एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यहां से कोर इफ यू टॉक अबाउट जो टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी है, दिस इज द पार्ट, यहां से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, जियोसिंक्लाइंस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक्स, रीसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग, वुल्केनिसिटी, अर्थक्वेक्स एंड tsunamis. All of these topics, if you talk about, belong to the tectonic geomorphology part. In the landform development, we'll later talk about factors controlling landform development, exogenetic forces, others like concept of geomorphic cycles and landscape development, denudation chronology, channel morphology, erosion surfaces, slope development, applied geomorphology, so slope development यहाँ तक है, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट जो वहां पे हमने लिखा ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज व्हाट, इट इज द रीसेंट ट्रेंड
which has emerged in the subject of geomorphology since 1970s. ठीक है, so this is basically what it is, applied geomorphology. और आज की डेट में अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी अपने आप में एक सब ब्रांच बन चुका है और बहुत एग्जॉस्टिव लिटरेचर है. लकी फॉर अस कि यहाँ पर यूपीएससी ने सिलेबस को एक्सक्लूसिव बना दिया है और बोल दिया है हमें कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, उसमें दो ही चीजें पढ़ो, जियो हाइड्रोलॉजी पढ़ो एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ो. ठीक है, तो वहां पर मेंशन कर दिया है कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में हमें यही दोनों चीजें पढ़नी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर के देखें तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा. ठीक है, तो दैट इज द नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं तुम्हें गारंटी यहां पर दे सकता हूं कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसी में से आए, बट यहां पर गारंटी देना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट इज वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी सब्जेक्टिव. मे बी जो मैंने क्लास में पढ़ाया है क्वेश्चन वहीं से आया लेकिन आप समझ ही नहीं पाए. I still remember one of the classes I was teaching, Thornbury laws, और उसमें there was one of the topics which we were talking about, appreciation of the world climate is necessary for understanding of the geomorphic processes across the world. ठीक है, तो world climate explain करता है different geomorphic processes which are taking place across the world. तो उसमें हमने देखा कि कैसे different climate की वजह से different area में different type के processes operate करते हैं. ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है समथिंग इट वाज अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को जोनल, यू हैव टू क्लासिफाई देम फ्रॉम जोनल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो क्वेश्चन वो बस उसमें वर्डिंग चेंज कर दी थी, दोनों का आंसर जो सब्जेक्ट मैटर था इट हैज टू बी सेम. एंड आई फाउंड नॉट अ सिंगल student of mine was able to answer that. ठीक है, so this is the problem with this part. यहां पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए हम इस पर कभी भी पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते. ऑल्दो जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें आता है अच्छे से और अगर हम उसको अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. ठीक है, so that is the nature of geomorphology. If you talk about क्लाइमेटोलॉजी में अगर मैं जाऊं तो इन क्लाइमेटोलॉजी में इट इज़ वेरी सिंपल. और क्लाइमेटोलॉजी को तैयार करने का सिंपल सा तरीका है कि हम सिलेबस को देखें ही नहीं. ठीक है, सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं ठीक है उससे क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी वो सिलेबस के बियॉन्ड भी जाने लगा. लाइक फॉर एग्जांपल सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स लाइक, अगर मैं देखूं तो कैन यू सी देयर इज अ टॉपिक टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, एक टॉपिक मेंशन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, तो यही दो टॉपिक मेंशन. अब मैं बुक में जाता हूं तो बुक में कैसे मेंशन होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस. बुक में जो मेन हेडिंग्स होंगी दे विल बी मोर लाइक ह्यूमिडिटी, एक टॉपिक होगा इन द चैप्टर, और इसके साथ क्या होगा, ह्यूमिडिटी एंड इट्स टाइप्स. यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी. ठीक है, बाद में देखेंगे. देन इसके बाद जो टॉपिक होगा इट विल बी कंडेंसेशन, और इस कंडेंसेशन में सब टॉपिक जो होंगे दैट विल बी व्हाट इज ड्यू पॉइंट, फॉर्म्स of condensation. ठीक है, so you can understand that there can be various form. 2 फॉर्म हो सकते हैं कंडेंसेशन के. एक फॉर्म होता है कंडेंसेशन का क्लाउड्स, दूसरा फॉर्म होता है फॉग. ठीक है, so फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में there is clouds and fogs. उसके बाद अगर क्लाउड्स बन गए तो बारिश भी होगी. ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. इसका एक सब टॉपिक हो सकता है, लेटेस्ट बुक्स में होता है अबाउट आर्टिफिशियल
प्रेसिपिटेशन, ठीक है, देन अदर टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक और होता है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, देन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये बुक में जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स में भी होगा। अब मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाता हूं, आई विल फाइंड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था दैट द टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। सिलेबस में कहीं पर भी ह्यूमिडिटी मेंशन्ड है? इट इज नॉट, ठीक है, इट इज नॉट मेंशन्ड, बट दे हैव एज्यूम्ड कि व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इट इज इंक्लूसिव, ठीक है, और इसलिए उन्होंने उठा करके पूछ लिया। इफ यू टॉक अबाउट सिमिलरली दे हैव आस्क्ड अबाउट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कंडेंसेशन, कहीं पर भी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर अब अगले साल यूपीएससी जाता है और तुमसे पूछता है फॉग्स, टॉक अबाउट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉग्स, so now you will fall in which type of student? There will be students जो कहेंगे बाहर निकल के सिलेबस से बाहर पूछता है, or you will be one of the students who is already prepared it and once you see it you will become happy कि ये तो मैंने रट रखा है और इसको मैं अच्छे से लिख दूंगा, मेरा टाइम भी बच जाए, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इन क्लाइमेटोलॉजी, सिलेबस को छोड़ के हम किताब टाइप से पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी, दैट इज द वे द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। सिमिलरली एक और टॉपिक देखते हैं इसी तरह का, सिलेबस में अगर हम देखें तो देयर इज मेंशन ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, दिस इज द टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। अगर मैं बुक्स में जाता हूं तो बुक्स में ऐसे साइक्लोन करके नहीं मेंशन होता, बुक में एक चैप्टर होता है विच इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस में क्या क्या हमें मिलेगा? वी विल फाइंड दैट देयर इज डेफिनेटली द टॉपिक ऑफ साइक्लोन्स, और साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, देन not only cyclones but even smaller level disturbances are talked about. Like for example, one disturbance which will be talked about is thunderstorms, ठीक है। thunderstorms भी कई तरीके के होते हैं, one is the normal thunderstorms which are occurring, there are severe thunderstorms, ठीक है, and severe thunderstorms के भी कई forms होते हैं, like one of the severe thunderstorm is referred to as cloud burst. It is a form of severe thunderstorm. In one form of severe thunderstorm, there is a phenomena which is hanging from the clouds, and this phenomena is referred to as tornado, ठीक है। A tornado which is present over water, it is referred to as water स्पाउट, ठीक है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाऊं तो नो डाउट साइक्लोन्स के पे क्वेश्चन पूछा है, बट दे हैव आल्सो आस्क्ड अबाउट थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। कैन वी से कि लॉजिकली दैट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई ऑल्सो प्रिपेयर दीज?
एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि अगर थंडरस्टॉर्म, क्योंकि सिलेबस में थंडरस्टॉर्म कहीं नहीं मेंशन, बट दे हैव आस्क्ड यू. ठीक है, तो दिस इज द वे वी हैव टू प्रिपेयर क्लाइमेटोलॉजी. ओशिनोग्राफी, लकीली अभी तक क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, दे हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट इज मेंशन इन द सिलेबस. ठीक है, so there we don't need to follow that kind of methodology. Here the previous year pattern is very clear. In case of oceanography, bottom topography of Atlantic, Indian, Pacific Ocean, सीधे सीधे questions, temperature, salinity, heat budget, salt budget, ocean deposits, wave, current, tide, सीधे सीधे questions आए हैं. तो यहाँ पर कोई ऐसा twist नहीं है, and it is a topic which is very faithful to us. हम इसको तैयार करके जाते हैं और अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो 100% है कि क्वेश्चन जो आएगा वी विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट दैट एंड सिक्योर गुड मार्क्स. ठीक है, बायोज्योग्राफी इज एन एरिया विच हैज बीन ट्रेडिशनली नेग्लेक्टेड बाय द टीचर्स इन यूपीएससी. ठीक है, क्यों, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स ओशनोग्राफी तक पढ़ते थे अपने टाइम में, स्टूडेंट के टाइम पे, तो बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी नहीं पढ़ते थे. बायोज्योग्राफी में केवल एक ही चीज पढ़ते थे, वो था सॉइल. और इसीलिए सॉइल एंड बायोम इज द ओनली टू टॉपिक्स विच दे टीच. ठीक है, बट बायोज्योग्राफी इफ यू टॉक अबाउट, देयर इज नॉट ओनली दिस टॉपिक ऑफ सॉइल, बट देयर इज दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब इसको यूपीएससी ने और बना दिया गड़बड़. तो जब हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं तो वी विल सी 3 तरीके के फैक्टर्स होते हैं. वन इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक कई तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक सनलाइट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, वाटर अवेलेबिलिटी is one of the factors, temperature is one of the factors, soil, wind, topography. इसी का एक सबसेट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर का बायोलॉजिकल. so there are several biological processes, ठीक है, which are determining. So like for example, biological processes can be dispersal of species. Like for example, if you talk about extinction is a phenomena, speciation, और भी चीज़ें हो सकती हैं. like for example, interaction between the species. interaction भी 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. when we are talking about positive interaction, it is symbiotic relationship बोलते हैं उसे. when we are talking about negative relationship interaction, we call it as competition. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ये इसके. इसी तरह से देयर इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्टोनिक फैक्टर हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड विथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इट कैन बी रिलेटेड विथ क्लाइमेट चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस. ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिटेल में वी हैव टू एसेंशियली डू, बिकॉज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस इंडिविजुअली फ्रॉम दीज. ठीक है, अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस पूछे गए. एंड नो डाउट सिलेबस में इट इज ऑल्दो नॉट डायरेक्टली मेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब बायोज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ बायोज्योग्राफी हैज बीन A.R. वॉलेस. एंड अकॉर्डिंग टू वॉलेस, बायोज्योग्राफी के 2 parts होते हैं. The scope of biogeography can be divided into 2 parts. One is systematic biogeography and the other one, if you talk about, is the regional biogeography. तो systematic biogeography में हम क्या पढ़ते हैं, like biomes. ठीक है, तो बायोम्स में अगर मैंने अभी बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
इतनी सारी जगह पर है, बट सब में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो दोज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर वी आर स्टडिंग हियर. रीजनल बायोजोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? यूनिक एरियाज. ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं द कंसेप्ट ऑफ बायोजोग्राफिक रीजन्स. ठीक है, तो अगेन यहां पर दिस पार्ट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ बायोजोग्राफी एंड इट इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव पार्ट ऑफ बायोजोग्राफी. ठीक है, ये सबसे बड़ा है, भले ही केवल एक लाइन लिखी हुई है बट बहुत बड़ा है. रेस्ट इट इज मोर easier to prepare. Problems of deforestation and conservation measure, social forestry, agroforestry, wildlife, major gene pool centers, rest are easy. Environment geography, when we talk about environment geography के दो पार्ट. One is the theory of environmental geography and one is the contemporary aspects of the environmental geography. ठीक है, so theoretical part is very easy to prepare. So principles of ecology, we know what are the principles. Human ecological adaptation, humans कैसे adapt किए. So humans have adapted. Ecological adaptation have taken two forms, biological adaptations and the cultural adaptation. So again we know कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा. इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स ने जो इन्फ्लुएंस किया है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे, याद करो मैंने बताया था I इज इक्वल टू पैट. ठीक है, तो तीन तरीके से ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस करता है, तो दैट इज ऑल्सो डिफाइंड, दैट इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक थ्योरी. देन ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस. तो ये जो इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस हैं दे आर इन द स्फीयर्स जो हमने बात की थी. तो हमने देखा था कि दिस इज द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. अब ह्यूमंस आर लोकेटेड हियर. ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड विद द ह्यूमन बीइंग्स? दिस स्फीयर हैज केप्ट ऑन expanding. So they are connected, they are dependent upon this. As a result of over exploitation, these spheres are shrinking. ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल जो चेंजेस imbalances हैं, what imbalances are occurring in the lithosphere, what type of imbalances are occurring in the atmosphere, what type of imbalances are occurring in the hydrosphere and the biosphere. ठीक है, so that is again something which is more contemporary. ये थोड़ा contemporary हो जाता है. recent phenomena जो न्यूज़ में है वो पूछे जा सकते हैं यहाँ पर. ecosystem and their management conservation, more traditional topic. environmental degradation, traditional plus contemporary. biodiversity and sustainable development, traditional plus contemporary. ठीक है, इसमें biodiversity बहुत सारी conventions हो रही हैं, बहुत सारे एक्ट्स डिफाइन हो रहे हैं. सो अगेन दे कैन बी आस्क्ड. एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल हजार्ड एंड रेमेडियल मेजर्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन. सो लेटर के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा अप्लाइड टॉपिक्स हैं, दे आर मोर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स. एनवायरमेंट ज्योग्राफी में कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थे. ठीक है, अदरवाइज एनवायरमेंट ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ एरिया विच इज ईजियर टू हैंडल. ठीक है, so this is the nature of physical geography. I will stop for today. ठीक है, we'll continue this tomorrow. and अब जो next classes होंगी उसमें कुछ कुछ जो physical geography की terminologies हैं उनको देखेंगे and then we'll after that we will be starting with geomorphology topic. ठीक है, goodbye, take care.